In the last class I told you that I'll be dealing with salary structure, right? I already briefed you about what is payroll management, the functions of payroll management, and what will happen if we go मैम for... रिवाइज करवा देगा मैम, लास्ट क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे। अच्छा ठीक है, okay. So are there other students also who need revision? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine then. If majority of you are saying this, then I'll make the revision work done today. See, I made you write few things, so you can take it from your friends, but I'll explain it whatever I taught in the last class. We were dealing with what is payroll management. The first class I briefed you about the structure of HRM in an organization. I told you about what the human resource department does in an organization, just broadly. Okay, there are various HR activities that are dealt with in details, that are going to be dealt with in details in the subsequent classes gradually as we move with payroll management. But I just told you what is human resource management, fine, what all functions are carried out by human resource management in an organization. Okay. Next thing, in the last class, what you're asking for revision is, I taught you what is payroll management. See, payroll management is made up of two different words. You can see, one is payroll and the other one is management, right? So what is payroll? Have you heard of the sentence that this particular person or this particular employee is on the payroll of the company? Right? So payroll means the list of employees who get paid by the organization. The list of employees, the list of people who get their salaries paid by the organization. This is known as payroll. So if in isolation you talk about what is payroll, सिर्फ अकेले में अगर ये पढ़ोगे कि payroll किसको कहते हैं, then you can say it is a list of employees who work in an organization. Okay, and these people or this list gets its salary paid by the organization. Okay, and what is management? So management is the process of paying salaries to the employees of the organization. So payroll management में हम लोग क्या करते हैं? Payroll management में what we do is we prepare a process. We go through a process of giving salaries to the employees. ये एक छोटा सा word लगता है. This looks like a small word. Okay. Muskan is saying something. You want to say something, Muskan? No, ma'am. So payroll management looks like a simple word, which in reality is not. Payroll management is a complicated thing. It is very, this is very complicated. This needs a lot of compliance, both on financial grounds and legal grounds. Okay. Now, payroll management का एक structure समझाया था last class में. Did you write that structure? Gross salary and net salary. Did you write that? No. Say yes or no. Did you write that gross salary is equal to basic plus allowance? Did I make you write? Tell me, give me answer. Did I make you write that gross salary and net salary? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Payroll समझा दिया. Payroll क्या होता है? It is just a list. It is a list of employees who are employees of the organization who get their salary paid from that organization. Management, payroll management is the process of getting that salary paid to the employees of the organization. ठीक है? देखो, salary जब भी बनती है organization में, तो वो salary बनाते वक्त there are lot of compliances which the organization has to take care of, like legal compliances, like financial compliances,
जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई आदमी काम करता है वो किसी न किसी टैक्स स्लैब में फॉल करता होगा ना, किसी न किसी स्लैब Yes, ma'am. किसी न किसी स्लैब में वो फॉल करता होगा, 2.5 लाख से नीचे, 2.5 लाख से ऊपर, या उसके ऊपर वाला स्लैब या लास्ट वाला स्लैब उसमें फॉल करता होगा। तो उसकी उसके सैलरी की जब कैलकुलेशन की जाती है तो उसके टैक्स का डिडक्शन होता है ना, उसका टैक्स का डिडक्शन करके Yes, फिर ma'am. सैलरी मिलती है। Yes, ma'am. उसका टीडीएस काटा जाता है विच इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट ही नहीं, इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एंड पेरोल, right? So sometimes in some organizations what happens is that sometimes क्योंकि सैलरी के कैलकुलेशन में फाइनेंशियल मैटर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए sometimes finance department or the accounts department of the organization takes care of payroll management. ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो पेरोल मैनेजमेंट का काम करती है, मतलब सैलरी कैलकुलेशन का काम करती है। लेकिन जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर आती है ना, जो भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर है, दैट मॉडर्न सॉफ्टवेयर इज इक्विप्ड एंड इंटीग्रेटेड विद so many HR activities that it has been widely accepted now that it has become a part of human resource management of an organization. ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी HR एक्टिविटीज लिंक्ड हैं, जैसे HR एक्टिविटीज, आई विल ब्रीफ यू अबाउट दीज एक्टिविटीज एज वी प्रोसीड फर्दर। जैसे एक्टिविटीज जैसे रिक्रूटमेंट, जैसे मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ फ्रेश हायर्स, जैसे ट्रेनिंग, जैसे परफॉर्मेंस, ये सारी एक्टिविटीज को Deduction. this deduction is completely salary calculation, तो वो तो पेरोल का पार्ट है ही है, लेकिन पेरोल वो पार्ट भी अब करने लगी है जो एचआर का पार्ट था, जैसे रिक्रूटमेंट इज एन एचआर फंक्शन। Yes, recruitment is an HR function. The onboarding process is always carried Yes, out by the HR ma'am. department. So what happens that the paperwork or the paper record of fresh hires is being carried out by payroll management also, payroll department also. Understood? उसी तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल पार्ट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं उनके परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता है, ये बताया जाता है कि उनका परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर और 6 months और whichever is the tenure fixed by the organization कैसा रहा। So now what happens, पहले ये सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट काम करती थी इस पे, अब बहुत सारी पेरोल सॉफ्टवेयर ऐसी भी आने लगी हैं जिनमें ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहता है। मतलब कि see what happens in some organizations, what happens that at the end of the day when you feed whatever you did in one day, सुबह से शाम तक आपने जो काम किया, शाम में जब आप फीड करते हैं तो उसकी एक कॉपी सुपरवाइजर को जाती है, ठीक है, जो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है, और एक कॉपी उसकी पेरोल में फीड होती है एज एन इनपुट कि आज दिन भर आपने क्या काम किया, and it has an automatic process of calculating. So at the end of the year या फिर मिडिल में भी अगर किसी एम्प्लॉयर को अपने किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस देखना होगा तो he does not have to take out the entire file and go through each and every page of that file to understand the performance of the employee. वो सीधा पेरोल में सॉफ्टवेयर में इनपुट डालेगा, एम्प्लॉय का आईडी डालेगा और वो देखेगा कि उसका परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर कैसा रहा है। ठीक है, इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो किसी प्रोसेस को वो एक्सपीडिट करता है, किस तरीके के प्रोसेस को, से फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिगिंग इनटू सम न्यू वेंचर, ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट है जो वो ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक कर रही है, and in doing so it needs some skilled people, some people who have excelled in their performance around the year. It is very cumbersome task and very time taking for the employer to go through the record of each and every person working in the organization. He will directly instead go to payroll software,
feed the employer's ID and find out the list of employees who he finds suitable for taking up that venture. Understand? Understand? और पेरोल सॉफ्टवेयर को एचआर एक्टिविटी से लिंक करने का क्या फायदा हो सकता है, आप लोग बताइए. You think and tell me. क्या मैम? पेरोल सॉफ्टवेयर को वेरियस एचआर एक्टिविटीज से लिंक करने का और क्या फायदा हो सकता है. एक मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस, बताया ना कि नॉर्मली क्या होता है कि परफॉर्मेंस आप जो काम करते होते हैं, यू हैव टू सबमिट इट टू योर रिपोर्टिंग मैनेजर or supervisor, whoever the concerned person is. But when when an input of a copy of your input goes to payroll software also, and it is recording your everyday's work, in that case what happens, it is easier for the employees to find out your performance, right? Yes ma'am. Apart from this, tell me, इसके अलावा क्या फायदा हो सकता है पेरोल का और एचआर एक्टिविटीज का? लास्ट क्लास में बताया था. टाइम रिड्यूस हो सकता है. हाँ, टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन आप एग्जाम्पल देके बताइए. ऑलवेज स्टडी विथ एग्जाम्पल्स, दैट वे यू विल कीप इट रिमेम्बर्ड. एम्प्लॉय सबको काम करने में आसानी हो सकती है मैम. हाँ, तो आप लोग जनरल बता रहे हैं ना, टाइम बच सकता है एम्प्लॉयज. मैंने आपको कैसे पिन पॉइंट करके बताया कि परफॉर्मेंस मेजर किया जा सकता है, किसी नए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस दोनों तरीके से मेजर किया जा सकता है. फिर यस मैम. एक तो आप जब एक्सेल कर रहे हैं किसी काम में, ठीक है, तो आप एक गुड एम्प्लॉय हैं ये रिकॉग्नाइज करने के लिए पेरोल डेटा यूज हो सकता है. प्लस इफ यू आर नॉट अप टू द मार्क, ये भी हो सकता है कि साल भर काम करने के बाद आप अप टू द मार्क नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि मे बी यू नीड सम मोर ट्रेनिंग, मे बी यू नीड सम मोर स्किल मैनेजमेंट, सॉरी स्किल एनहांसमेंट. ऐसा हो सकता है कि आप अप टू द मार्क नहीं है. Yes ma'am. So in that case, what happens is that the company will find out through the payroll data, through the input which is fed to the system, that which are the employees who need training from our organization, maybe to excel themselves, maybe to better enhance their skills. Okay. Yes ma'am. Next, recruitment. Also, recruitment is one HR activity which is linked with payroll management these days. Softwares बहुत updated आते हैं. ये depend करती है किसी भी कंपनी का जो financial capacity है उस पे कि वो कितना महंगा सॉफ्टवेयर और कितना skilled person को hire कर सकती है payroll के लिए. अपने कंपनी में कितने खर्च कर सके, आप अपने कंपनी में किस तरह के सॉफ्टवेयर को खर्च करने के लिए financial capacity रखते हैं. फाइनेंशियल करता है. Like recruitment. Recruitment is an exclusive HR function, but what happens that maintaining the record of fresh hires is also nowadays a work of payroll management. That way what happens, वो recruitment वो data रखती है, इसीलिए salary बनाने में उसको आसानी होती है, right? ठीक है. तो payroll management का क्या process होगा? Everything which starts from recording the list of employees in an organization, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाने से लेके मेंटेनिंग देयर रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपेंस, उनके ऊपर या उनके बाय देम, यू नो, ऑन देम एंड थ्रू देम जितना पैसा खर्च हुआ उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, एंड दैट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ पेरोल मैनेजमेंट. समझ में आई बात? You got the point? All of them who were asking for revision, you got the point? What is payroll management? You're getting my point? What is payroll management? Yes, ma'am. Okay. See, payroll management is basically what? It is basically processing of salary, right? But this process is not that simple. There are so many dimensions to it. There are so many aspects to it. Gradually, we will start studying one by one. Okay. Did I make you right in the last class few points? Payroll and HR activity. Advantages. Yes, ma'am. You wrote Yes, all ma'am. those, or have you written all of those things? Advantages of payroll management and all?
Yes, ma'am. You know? Okay. Now you write down. Write down. See, you don't worry. Even if you're not aware of the HR functions, I'll anyway be dealing with these HR functions in the gradually. Okay, you learn it slowly. So don't hurry up. Now write down. Initial consideration for payroll calculations. Repeat. Initial considerations for payroll management. Sorry, payroll calculation. Yes, ma'am. Point 1, pay period. Pay period. Yes, ma'am. Second, salary structure. Ma'am, first. First one is pay period. Salary structure. Second, Yes. ma'am. Second is salary structure. Third one is employee type. Employee type. Right down. Third one is employee type. Time, ma'am. Type. किस type का employee का salary structure Okay, salary ma'am. बनाना है? The type of employee. Employee type. इसका मतलब है बताते हैं अभी. लिख लो फिर I'll explain this. ठीक. Employee type. Next, statutory requirements. Statutory requirements. STA. TUTORY. Statutory requirements. Requirement. Fifth point, salary calculation modes. Yes, ma'am. Repeat it. Salary calculation modes. Salary. Mode. And last one is employees bank information. Employee bank information. मैम क्या बोल रही हैं लास्ट? Employee bank information. Employee के बैंक का information. Now we'll deal with these points one by one. Okay. What is the first point? Tell me. Pay period. Pay period. Pay period. What is pay period? देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब सैलरी कैलकुलेट होती है, से फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पीरियड 7 is the date when you're supposed to get the salary, or 15 is the date when you're supposed to get the salary, or 1 is the date, 1 of every month the employer pays you the salary. Okay, the pay period normally ends or should end 5 or 6 days before that. ओके यानी कि जितना कैलकुलेशन होना है वो 24th या 25th को प्रेफरेबली खत्म हो जाना चाहिए, राइट? दिस वे इट इज इजियर फॉर द पेरोल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट टू टेक आउट द कैलकुलेशंस. अगर 29th तक सैलरी कैलकुलेट होती रहेगी so it will be difficult for the department to generate a salary slip for first of that month, first of next month. okay, सो पे पीरियड का मतलब होता है कि जब आपको सैलरी मिलनी है, जो पीरियड फिक्स किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके नॉर्मली 4 to 5 डेज पहले ही उसका सैलरी कैलकुलेशन का जो पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है, ताकि आसानी हो बाकी के सारे कैलकुलेशंस को करने में. ठीक है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉइंट? Salary structure. Salary structure. Okay, what is salary structure? See, ये जो अभी हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं पेरोल कैलकुलेशन,
के लिए क्या क्या जरूरी है. These are the basic requisites of payroll calculation. मतलब इतनी सारी चीजें आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी बनाने के लिए लगेगी ही लगेगी. इतनी बेसिक चीजें. पहला हमने बोला पे पीरियड. पे पीरियड मीन्स दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ of salary should end 4 to 5 days prior to giving your salary. Say suppose this organization gives you salary on 1 of every month, so the corresponding pay period of last month should end near about 24 to 25th of that month. Okay, next point is salary structure. Okay, see, an organization contains different types of employees, right? उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं, सबकी सैलरी अलग होती है, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, हायरार्की और लेवल्स अलग अलग होता है. जब उनके हायरार्की अलग अलग होंगे, वो अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज हैं, तो उनका अलाउंस, उनका बेनिफिट, उनका डिडक्शंस, ये सब कुछ अलग अलग होगा, राइट? तो बेसिकली अ फ्रेमवर्क ऑफ that level of salary is known as salary structure, and this information about salary structure should be available with that payroll management of that organization. ठीक है? Okay, Yes, ma'am. next point, Ma'am, employee types. employee type. This is again the same thing, that you need to have the list of all the employees who are working in your organization, because salary is being paid to the people who are towards the lowest bracket and also to the people who are towards the highest bracket in the organization. So in that case, you should have the information regarding each and every kind of employee who's working in your organization. Fine, the employee type. Next, Statutory requirement. statutory requirements. Okay, statutory बहुत बार ये word आ चुका है. What is statutory? Any idea? Tell me. No. स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स या स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस का मतलब होता है मैंडेटरी कॉम्प्लायंस. मतलब वो कॉम्प्लायंस जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन को करना ही करना है, आप उसको ओमिट नहीं कर सकते हैं. आप बाकी चीजों को छोड़ सकते हैं, कोई और बेनिफिट कम कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस जो है या स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एंटाइटल्ड होता है जिसके लिए, वो आपको देना ही देना है. ओके, so statutory means mandatory compliance. Yes, ma'am. Okay, so what was the point? Salary calculation modes. No, before that statutory में क्या लिखा है? Statutory requirements you wrote, right? Yes, ma'am. स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब हुआ? वैसे रिक्वायरमेंट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी बनाने के वक्त ध्यान रखना ही रखना है. जैसे हम आगे पढ़ाएंगे तुम लोगों को, सोशल सिक्योरिटी पढ़ना है और लेबर लॉज पढ़ना है तुम लोगों को इसी में, पेरोल मैनेजमेंट में. उसमें बताएंगे एक एक्ट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास की है, विच इज नोन एज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. ठीक है, ये जो एक्ट थी, दिस वाज पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1948. और इस एक्ट में लिखा हुआ है, आपको डिटेल बहुत नहीं जाना है, बट यू हैव टू नो व्हाट इज रिटन इन दैट एक्ट, क्योंकि आप पेरोल पढ़ रहे हैं तो आपको जो भी स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस वाला एक्ट है उसके बारे में जानना जरूरी है. ओके, दिस एक्ट सेज, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, दिस सेज that regardless of what the size of your organization is, ठीक है, whether it is big or small, whether it is making profit or not, you have to give minimum wages which is determined by the central government to the employees. एक वेज फिक्स किया हुआ है जो हर स्टेट का अलग अलग है, आप उसको देखेंगे और वो वेज आपको देना ही देना है. इससे मतलब नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी है कि स्मॉल है, यू हैव टू कंप्लाई विद दोज गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स. समझ में आई बात? ठीक है, हाँ.
और स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस में क्या है, अभी हम एक फॉर्मूला लिखाएंगे, उसके पहले ये जान लो स्टैट्यूटरी रिडक्शंस जो कि गवर्नमेंट का किया हुआ है कि वो करना ही है। आपने सुना है सैलरी से पैसा कटता है, पीएफ कटता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. PF is the reductions of PF is guided by the Provident Funds and Miscellaneous Provision Act 1952। समझ में आई बात? ये पीएफ ma'am. जो है ये गाइडेड होता है एक एक्ट से जो कि 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, एंड विच इज द प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। उसके अकॉर्डिंग ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसका डिडक्शन होता है 12% गवर्नमेंट देती है, 12% एम्प्लॉय के सैलरी से कटता है। ठीक है, तो ये सब स्टैट्यूटरी डिडक्शंस है, ये करना ही करना है। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन सैलरी दे रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन को पीएफ में कंट्रीब्यूट करना ही करना है। अगर वो नहीं करती है या स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस अगर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मानती है, then there could be some serious fines and serious penalties over that organization। समझ में आई बात? और ये सारा स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस हम पढ़ाएंगे, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे आप लोग। पहले सैलरी समझिए, पेरोल मैनेजमेंट समझिए कि पेरोल मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके बाद सैलरी बनाना होता है, उसके बाद आप सैलरी का स्ट्रक्चर समझिए, क्योंकि आप बीबीएम फर्स्ट ईयर हैं, सो आई एम श्योर यू डोंट नो द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, राइट? आपको अलाउंस, बेनिफिट, इंसेंटिव ये सब के बीच में डिफरेंस मालूम नहीं होगा? No, ma'am. Then I'll deal with all of those things so that it gets cleared in your mind, and then हम आप लोगों को statutory compliances and statutory deductions पढ़ाएंगे। ग्रेच्युटी पढ़ना है आपको, वो भी एक स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस है। ग्रेच्युटी क्या होता है? जब आप 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट। ठीक है, ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो सब कुछ हम उस वक्त बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताओ। Salary calculation modes. ओके, सैलरी कैलकुलेशन मोड। व्हाट इज सैलरी कैलकुलेशन मोड? देखो, there are different organizations that calculate their salaries differently। जैसे कि पब्लिक सेक्टर का अगर जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसका सैलरी कैलकुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग होती है उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे आप पीएसयूज देखते हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, वो डिफरेंट होता है। उसके बाद जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आप आते हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो उस वक्त भी उनका जो सैलरी कंप्लायंस होता है, सैलरी जो बनती है वो डिफरेंट होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सैलरी कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है दैट डिफर्स। ओके, organization to organization the modes of salary calculation differs। some organization will keep you on probation for 6 months, right? Then there are other organizations that will keep you on probation for 1 month. Then there could be other organizations that will keep you on probation for 2 years, fine? And what happens generally is that when you are working in an organization in probation, you are generally on leave without pay। means if you are taking leave for 2 days, your 2 days salary will be cut। ठीक है, तो जब सैलरी का कैलकुलेशन होगा तो उस लीव विदाउट पे विच इज कॉल्ड LWP, उसका भी कैलकुलेशन होगा ना? Yes, ma'am. प्लस उस ऑर्गेनाइजेशंस में बाकी जितने तरीके से ऑपरेट करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जहां LWP का बहुत प्रोविजन शायद नहीं होगा। So this way, the modes of salary calculation, what exists in that, what process exists in that organization, this matters। Next point. Employee bank information. See, earlier what happened that there were some benefits like bonus or something which was paid in cash in hand. Gradually it shifted to checks, but what happened in both these things, there were some problems related to logistics management। so what happened that for better ease it shifted towards
transferring it in the salary, bank salary account. Yes, nowadays salary is being transferred to bank account. Yes. So an employee could have more than one account in the same bank, right? So having the correct information about the account number is mandatory for the employers to keep a smooth salary process management. Okay. Plus there are many confidential numbers like आपका पैन कार्ड नंबर, आप अगर ESI का पेमेंट करते हैं तो आपका ESI नंबर, प्लस आपका प्रोविडेंट फंड का PF का नंबर, these all things remain with your employer. जब पेरोल मैनेजमेंट वो करती है, पोस्ट पेरोल प्रोसेस में पढ़ाएंगे कि जब वो आपका सैलरी बना देती है, सैलरी स्लिप जनरेट हो जाता है, उसके बाद पेरोल प्रोसेस में और भी प्रोसेस होता है, वो उस रिक्वायर्ड एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशन को या अथॉरिटी को आपका काटा हुआ पैसा जमा करती है. जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा आपके सैलरी से कटा, वो स्लिप जनरेट हुआ कि आपके पीएफ नंबर से वो सैलरी कटी, एंड देन इट इज डिपॉजिटेड टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. ठीक है, तो वो सब चीजों का कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग ये भी पेरोल मैनेजमेंट करती है. बैंक अकाउंट नंबर, योर पीएफ नंबर, योर पैन नंबर, योर ईएसआई नंबर, ये सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियली रिकॉर्ड करना, ताकि पेरोल मैनेजमेंट करने के टाइम पे, ताकि इन चीजों का these things do not fall into hands of any unauthenticated users or any wrong person inside or outside the organization, is also a task of payroll management of any organization. You understood? Yes, ma'am. Okay. So in the next class, we will start with, see, this class I already told you what I told you in the last class, but since many of you were in revision mode, so I revised all of what I taught in last class. In the next class, we will start with salary structure. Payroll management के लिए आप जब salary structure पढ़ना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे फिर और पेरोल मैनेजमेंट में चीजें समझ में आने लगेंगी, क्लियर होने लगेंगी. ऐसे हम बताएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप किसके पॉइंट में कौन सा सब पॉइंट पढ़ रहे हैं. ओके? यस मैम.